A very good morning to all of you. Okay, we will wait for a couple more minutes so that few people who are trying to join us they are able to. Okay, so we'll wait for just 2 more minutes and then we will start the live streaming. We'll start the session. It's also live on YouTube. Okay, so if you want to share the link with anyone, you can do so. Uh, Regarding either the Google Meet link, okay, or the, let me copy this link. So if you would want to share this with your friends, so you can share this link for Google Meet, or you can share the YouTube live link as well. Let me share that. So this is the YouTube link which you can share. Okay. Good morning, Vishal. Can you hear me? Hello everyone. I just want to confirm whether you can all hear me. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay, thank you, Nitish. Thank you all very much. I also want to confirm on YouTube Live if you can all hear me at this moment. Morning, everyone. Hi, Vishal. Can you hear me? Just. Okay, maybe you are not audible to me. Let me just. Okay, can you please speak now? Yeah, I think, I yeah. think we can hear Lawrence, sir. Okay. Now I can hear you all. Okay, there was problem with my audio only. Okay, so I could not hear you all. I thought you Now, can hear now me. you are not audible. No, I'm audible, right? So yeah, I can hear you also. Earlier, you were not audible to me. Okay, because You of are not some audible. not audible. Lawrence, sir, you were audible earlier. Now you are not audible. Okay, just a second. Am I audible now? Yes, sir. Okay, that's good. Okay, we are good to know. Yes. So Vishal, can you hear me now? Hello. Vishal, sir, is not audible, sir. Am I audible? Yes, Yes, you sir. are audible, Lawrence, sir. Yes, sir. Yes, sir. But Vishal is not audible. Okay. Yeah. Vishal, maybe there are like three. Can you check if you're on mute or not? Okay, you can join again.
okay, and just see if you are, just make sure you're on unmute. So good morning, everyone. Again, Vishal will join. He'll shortly be with us. So if you have any questions, so it will be more like a conversational session. If you have any questions from Vishal, you can ask. You can put those in the comment box. That would be best. Okay. So and then he will try to address those. I will introduce him once he joins us. For those who do not know him already. Okay. We will also have a session on the solutions to GSI prelims. So that day we were able to finish some part of it. We have another session. Okay, so all right. I think Vishal just joined. So we will have a session for solutions as well. Okay, good morning, Vishal. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, good morning. Now you are audible. Perfect. Yes, sir. So actually, my laptop is not working. That's why I'm not able to join from it. Okay, have you joined from your phone now? Yes. Okay, Yes. that's no issues at all. Okay, so without any further delay, I will introduce Vishal to you. So Vishal has done both his BSc and MSc from BHU. Okay, and he got rank 1 in Lucknow University entrance examination, rank 5 in Osmania University entrance examination, and as you already all know, rank 21 in GSI combined Geoscientist UPSC examination. So, and again, he has qualified GATE multiple times. Similarly, NET qualified. He before now getting his GSI rank, he was working, or he was actually at IIT Kanpur. He was pursuing his PhD. So he has research experience at IIT Kanpur as well. So a lot of achievements in his bag, and we at Planet Geology are very proud to host him today in this live session. And the idea is that he can provide motivation to all of you. Okay, and if you have any doubts, sometimes we ourselves as teachers are not the best people to guide you in some areas. Okay, so you need to have connection with students who have just appeared in the exam, who have aced the examination. So that was the entire idea for this talk. And maybe I can ask Vishal to say a few words, and then we will basically have an open session. So don't think it as a formal session. It's more like a conversational. So if you have any questions, any doubts, you can either post them, or you can ask to him directly. Okay. So over to you, Vishal, if there is anything you want to say, and then we will be open for questions and answers. Okay, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. I'm Vishal. I've done my, as sir introduced me, I'm from BHU. And I just qualified right now. And I hope I can help you all in some way during my journey of like this qualification and all this. So if you all have any questions, we can start right now from the beginning to the end. And I'll try to answer as many questions as I can for this. Yes. So, Vishal, just like one quick uh, question I wanted to ask: have you had your medical, or is it still, you said like it is in first week of October, right? Yes, sir. So it's scheduled on like 6th and 5th of October right now. I'll leave for the for Delhi in some days. Yes, sir. Okay. Okay. That's good. Yeah. Okay. Uh, I think we don't have any questions yet, so I can ask you maybe initial few questions. Okay. So, Yes, sir. Yes, sir. can Sure. you tell us a little bit about your journey, in the sense that when did you start thinking about combined geoscientist exam? Was it something that you wanted to do when you were doing your MSc or BSc,
or something that you thought of later on? So I came to know about this examination in my BSc third year when I was doing my honors course in BSc. And at that point, I realized that I wanted to do it along with GATE. I Okay. was not sure whether I should take GATE or GSI. So I was preparing for both. And when in my first attempt, I gave my first attempt when I was in first year, just to see how much can I write. And people used to say that it's a very lengthy examination. It Mhm. has three papers, four papers of 3 3 hours each in 2 days. So I wanted to see if I can do it and complete my papers and complete the set of questions which are given there. And after giving my examinations, I realized that I can prepare for it. If I prepare for it, maybe I can qualify this. And during my MSc also, I was preparing for GATE and GSI both simultaneously. And in my 2019 attempt, I was not able to qualify this examination. So I thought that maybe I should give it a more preference to my GATE preparation. And Mhm. then I am doing this for I think like 3 years continuously. I was preparing for it. Even I did some civil services coachings and all that to Okay. prepare for the G examination also. Yes, sir. Okay. So you have appeared both when it was like older pattern and the revised Yes. pattern also. So you have given both examinations. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So can you just elaborate a little bit on what has changed in the latest format? So the latest format is very different in the sense that in the first format we only had to do the subjective paper preparation, Mhm. and right now in this format we have to prepare it like civil services or the papers for forest services, in which we have prelims, mains, and interview. Mhm. So in that way, we have to start a preparation a bit more early, and we have to be a bit more diversified in our preparation so that we can capture all the aspects of syllabus, so that the numbers which we get, they help us get a rank which we want. Because in this examination, unlike civil services and forest services, the prelims number are added in the whole overall tally. Mhm. So that's why we have to be very, I think it's my opinion that we have to be very cautious when we give prelims or prepare for prelims specifically, because Yes. general sciences, some general studies, yes sir, the general studies is something which I think is a very vast topic. And in that way we have to start a bit early in Yes. comparison to the other format Definitely. which we had earlier. So we have a lot of questions here. I will jump to those questions. Before that, I will ask Sure, one sir. final question. You said like you appeared in four papers in mains when you gave it the first time. Before the format was revised. After it was revised, Yes you sir. Yes, there are now three papers only, I think, in the mains, if I'm yes, not correct. yes, yes. So which paper has gone away in the main stage? So actually, when I gave it the first time, we had the seats for geologists and hydrogeologists both. Mhm. So we had four papers, and when in my like 1920 attempt also, there were like 20 seats. I guess four seats for hydrogeologists Okay. also. So there were four papers, Okay. but when in next attempt there were like only I'll say hydrology seat. So Okay. in that case we were not we didn't had to give the third Third paper paper. of Okay. GSI, because for both the papers, the number of papers which are counted are three. Okay. In Yes. GSI, paper one, paper two, and paper three, and in hydro, paper one, paper two, and hydrogeology. Okay. So yeah, All right. yes. Uh, so have you ever given hydrogeology paper as well or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. Okay, that was just for yes, information. So a lot of questions here that I'm getting are related to general studies preparation strategy. So yes, what do you yes. think should be the preparation strategy for the general studies paper? So, in my opinion, the paper specifically for GSI prelims, the paper is very much centered around these current affairs and science and ecology subjects. So Yes. I guess if yeah.
So if anyone is trying to prepare for it from, I'll say, starting from the scratch, you should take a monthly compilation of current affairs from any publications, whether it is Insights, Vision, Vajram, anyone which you can find, and stick to it for, I'll say, for 3 to 4 months at least. Okay. If you are like starting a little late, and if you are starting from the beginning, do it for like 6 or 7 months at least. Okay, so that you can get an idea that what kind of questions can be asked from the current affairs. Because what happens is, for example, you have a topic called wetland in ecology, and it is a very much asked topic. All the exams which I have given till now in GSI, they all have at least 4 to 5 questions from wetland and ecology. So if we are like talking about wetland, then we should know what are Ramsar Convention sites, what is Ramsar Convention, when was it like formed, which is the organization which formed it, where are its headquarters, when did the Indian state become the signatory to this convention, all this, and all the news which can come regarding this in the current news cycle from, I'll say, 1 year, from January to January, because this is the time when the notification question papers, notification and the exam holds, like February or January end. So this is how we should start for current affairs. And in case of general studies, general science and ecology, I believe that if you cover NCERT for 11th and 12th, for physics, chemistry, and biology in 11th and 12th, the science portion is almost covered, almost covered. And for ecology also, in the biology book, we have a portion in the last unit, ecology unit. It has 4 chapters. So those 4 chapters are a good primer for the preparation. After that, you can go for environmental studies. In that, Shankar IS has published a book on environment. This book is quite good. It will also help you in your environmental geology paper also. It has a lot of material, and it's in a very concise and precise note-wise form. You can like take a printout and read it yourself, and it will help you. It will really help. Yeah. Okay. Another question. It is a short one, quick one. Are there any So you're not audible, sir. Yes, I was on mute. Yeah, this next Okay, question is a very quick one, short. So, are there any minimum number of attempts like civil services examination for GSI exam? Actually, it should be maximum number, not minimum. The difference. Yes, maximum. There is an age limit similar to this of 30, 32, but I'm not aware of the maximum attempt. I guess it's similar as it's not same as civil services. I You think can there give are it as there is no limit on number of attempts. It's only age limit that is there. yes, as far as I can remember in my notification which I have read. I don't think there was any Yeah, limit in even that this way. year there But is no there's an age limit limit. on number of attempts. Even this year. So I've gone through the Yeah, notification. yeah. So it's mostly age limit. Civil services is different because people from different branches are given, and they're not appearing in their own respective branch necessarily. Here it's something you have done your degree in. So something that you Yes. want to do, you want to work in. So there is no sense in putting that limit on attempts as well. Okay. Yeah. Yes. 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 Okay. Okay. All right. So And yes, Vishal. no, sir. So please continue. Yes. Yes. So there's one question. Did you go through Lucent book? Because I have also been getting this question many times. Did you go through that book for general science or in general for Yes, general sir. studies? Yes, sir. I went through Lucent. Lucent is a good book, but the problem with Lucent in my case was that it is not that I'll say cost benefit ratio of that book is not very good for our examination, because the kind of history it has in its pages is very concise, and history is a very vast subject, and the questions from history in like in our exam are very precise. Mm-hmm. Like in my first attempt when I was giving GS examination, I had this question from medieval history, in which Jahangir, they asked me that who was the person who came to meet Jahangir first time, first Englishman, and what did he bring. Mm-hmm. So नाम तो पता था कि ठीक है ये नाम है, पर्टिकुलर नाम है उनका, लेकिन वो लेकर क्या है ये नहीं लिखा है, तो ये लूसेंट में भी नहीं दिया हुआ है. So for that you have to read
other books like Rajiv Vahir का Spectrum की एक किताब है. There's a book for modern history. In that medieval से लेके modern तक उन्होंने cover किया हुआ है. तो So उसके लिए yeah. yes, now see, for some students now time may be very limited. Okay, Yeah. so Yeah. for example, some subjects, history and all, so you may need to spend a lot of, as you said, cost benefit. So maybe if you're going through different reference sources, you may need to spend a lot of time, okay, to get some reward. What do you think Yes. in general studies are the low hanging fruits? मतलब जिनमें minimum effort से maximum marks आ सकें. What are the easiest topics which we can cover first? सर प्रायोरिटी वाइज मैं कहूंगा कि सबसे पहले जनरल स्टडीज है, जनरल साइंस है. जो साइंस की बात मैंने एनसीईआरटी का 11th and 12th की बुक्स, एंड उसके बाद इकोलॉजी वाला पोर्शन जो है आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं इफ यू हैव जस्ट like read 4 chapters which I'm talking about, like 4 ecology chapters in 12th NCERT book. And after that, if you can take some questions, some topics like wetland, which I'm talking about, wetland, ecological niches, various environmental laws, all these are given in Shankar Iyer's book. Yes. If you can take it, it will really help you, and it will cover at least, I'm saying, like 50% of the syllabus will be covered along with current affairs. Current affairs is also a very foot. If you try to cover it like rows, every day you study and take some topics and study, take a magazine, take a vision magazine for example. मैंने vision से पढ़ा था. तो उस केस में क्या होता है कि जैसे आप शुरुआत में ले लो, अगस्त सितंबर शुरू होने वाला है तो अगस्त का ले लीजिए, फिर उसको आप 2-2 3 करके दिन में खत्म करते जाइए. तो उससे क्या होगा कि उससे एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसेगा. ठीक है, लाइक इट विल टेक like 6 months के अंदर आपके 5 questions you will get, 5 to 10 questions you will get at least, and 5 to 10 questions from science and ecology. So 10 to 20 to 30 questions will be covered from this. So I think these are there, and then we can do geography also, because geography में map based questions भी कुछ आते हैं. Yes, So in they geography, are very physical geography, I think is similar to some questions I Yeah. found. Like for example, this year there were some questions from glacial landforms, basics. Yes. From physical geography, I found like few questions are directly from NCERT. There was, for example, one Yes. table is given in NCERT in which they have given that basin groundwater utilization from every basin. So it's a direct table from NCERT which they have taken up and asked Yes. question on. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Even so, like some questions are very common. Like in case of Narmada Tapi, which of the rivers are like east flowing, which of the rivers are like west flowing, like that question. These questions are very common. Yes. और वो सारे सर आप like geography कोई भी किताब उठा लें, आप सविंदर सिंह उठा सकते हैं. आप एक जीसी लियोन की किताब होती है, बहुत चलती है ये CSS parents में. तो this is also very useful. वो अच्छा है. Definitely. वरना NCERT का 11th 12th is very good for me. Yes, definitely. And one biggest advantage for you all, if you start preparing for general studies, is that it will open up a lot of avenues for you outside geology as well, if anyone is interested. Let's say you want to explore Indian Forest Services, civil services, and several other UPSC and state services examinations which are conducted every year. So once you have that base, you're preparing for geology, your optional is also set. For example, many state services, there are geologist examination also, there are state civil services examination, administrative posts are there in the states. So those avenues will also open up for you. Okay, so it is something that you need to prepare. I think the only difference is in this GSI prelims, the science portion at least that they ask is very static and it is very fundamental. Okay, they ask you concepts. For example, if you look at the science part in the civil services exam, they focus more on current affairs part of science and technology. So here they ask a lot of fundamental questions as well, and they ask a few numericals also from the physics part. Very simple numericals, but something. For example, you should know what is resistance, what is power, what is work. So all these units you should know. Okay. Yes. Let's see what other questions we have on YouTube. We have. So yes, Varun is asking, did you prepare for prelims and mains together? Or did you prepare when prelims was there first for prelims and then mains separately? I prepared for both simultaneously. My schedule was like I started my day at 10 o'clock. So उस समय सुबह उठा तो उसके बाद like properly I used to write
my answer writing, all that practice, because मैं notes नहीं बनाया, मैं notes नहीं बनाता था. मैं क्या करता था कि like मेरे पास किताब है, मैंने विंटर से पढ़ा, अगर मैंने like igneous का मेरे को कवर करना है, तो मैंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रिंट आउट्स निकाल लिए. लाइक मेरे पास 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स के प्रिंट आउट्स हैं, and then I used to compile them according to the subject. Like if I'm doing it for igneous petrology, I will compile all the questions for igneous petrology in 1 or 2 pages, year wise, and then I'll prepare it as a answer writing session. Like there will be 10 short answers, and all the other sections will have three questions of igneous petrology. In that way, I'm able to complete all my syllabus in 3 hours, because फिर मेरा प्रैक्टिस भी हो जाता था कि ठीक है, ये आंसर राइटिंग की ये 10 से लेके लाइक 1 बजे तक पूरा एक पेपर लगा लिया मैंने. So this is how I used to like compile and recheck my answers myself. And in the evening, like after you have like given 2 papers, 10 to 11, 10 to 1, and then 2 years, 2 घंटे का गैप, फिर से 3 घंटे का एक पेपर. उसके बाद खाना खाने के बाद I used to like do it, vision के compilations and all. So this is how I used to do it when I was like in proper mode. Like I was like having this schedule. In the starting, I used to have some difficulty in managing everything, because I used to have classes, and there was a lack of motivation, because I used to feel like how should I pursue, there's so much to cover. In that case, whenever I used to feel down, I used to take up like sciences. So in that case, 11th की बुक उठा ली, एनसीईआरटी की, 12th की उठा ली. छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप 1-2 बार में कवर कर सकते हो एक हफ्ते में. इफ यू ट्राई, अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं आप, एक हफ्ते में आप बायोलॉजी की किताब आप रीड कर सकते हो एक बार. यू विल नो क्या क्या है उसके अंदर, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक नोट्स बाय सीइंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्या क्या आया है. सो आई विल आल्सो सजेस्ट, बिकॉज क्या होता है कि प्रीलिम्स और मेंस में अंतर नहीं है. लाइक जो भी आप पढ़ोगे मेंस के लिए, वो प्रीलिम्स का एक एक्सटेंशन है. तो अगर आप एक्सटेंशन के हिसाब से पढ़ते हैं तो फिर प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा आपका. एंड जियोलॉजी का पेपर का वेटेज भी ज्यादा है, 300 नंबर का पेपर है वो प्रीलिम्स का. सो Yes, इफ अगर exactly. आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, सो या एक अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो इट विल रियली हेल्प यू, बिकॉज फिर आपको ज्यादा ही पता होगा, Yes, कवर कर definitely. लेंगे, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. Yes. Or definitely, and do not ignore prelims. Don't think that it is just qualifying. Still, students are, for example, from comments which I've got on YouTube channel and all, they're still thinking like, what is the cutoff for prelims? Is it just qualifying? So it is not qualifying. It will count to your final score. Okay. So general studies portion is worth 100 marks. Okay. Yes. Geology, it can create a lot of difference. Okay. The second Yes. part is your prelims. Okay. Geology is 300 marks, so that is total 400 for prelims. 400 marks. Okay. Yes. So and then 600 is for mains, right, if I'm not wrong. Yes. So Yes, sir. Yes. Yes. it's quite significant if you see prelims weightage also. So you have to do well for prelims as well. So look at the previous year papers. So we have gone through solutions in one of the earlier classes. We will have another class for that as well. And you see, every time you read you get a particular question, you have to see, for example, or you have to read about that topic. It's not that you just solve that question and move on. Okay, if you think that I'm getting these wrong, you have to read about that topic. Okay. Okay, let's move on to the next question, which. So, can you prepare for GATE and GSI exam parallelly at the same time? It's a bit difficult if you are considering the GS part. It's a bit difficult, but you can do it. Like in my case, I used to do SIRS classes at 9 p.m. every day. Like we have to have those classes, and those classes really helped me in my GSI preparation also. Like all of my structural geology concepts have come from SIRS courses. Even for metamorphic igneous, I'll say whatever classes I was able to do, I was able to like use it in my GSI preparation. So you have to calibrate. Like देखो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में से हाउ कैन यू टेक आउट मोस्ट ऑफ इट. अगर आपके सामने आपको कोई समझा रहा है, आपको कोई 2 घंटा 3 घंटा पढ़ा रहा है उस चीज को, और अगर आप उसी चीज को थोड़ा सा इस तरह से देखें कि आपका आज ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपने एमएससी में अच्छे से नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक आपने बीएससी में अच्छे से नहीं पढ़ा है, आज आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो आप उसको पढ़ो और उसी समय जस्ट राइट दोस मेन पॉइंट्स. ये हेडिंग्स आज हमने कवर करी है, तो उसको फिर लाइक व्हाट आई यूज्ड टू हैपन, लाइक सर यूज्ड टू अपलोड द नोट्स आफ्टरवर्ड्स, लाइक आफ्टर द क्लास और समथिंग लाइक दैट. तो हमने उस नोट्स के अपने नोट्स बना दिए, लाइक छोटे छोटे बना लिए, उसमें हेडिंग के सामने कुछ कुछ लिख के.
So what used to happen ki, like I also have a printout of syllabus with me. In that syllabus, I used to like mark like कि this portion has been covered today. ये वाला portion आज हो गया, इसमें इतना कर लिया, इसमें इतना कर लिया, color coding के साथ. Like green used to be my color कि ठीक है, आज ये वाला portion हम complete कर चुके हैं, अब इसको revision के लिए उठाना है. Black है कि भाई ठीक है, अभी थोड़ा सा बाकी है. And red used to be कि we have to do this. अभी मतलब नहीं हुआ है ये. So आप कर सकते हो. बट न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम करेगा बिकॉज जीएसआई में क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स उस हिसाब से नहीं आते, बट गेट में आते हैं. बट हो सकता है, इट्स पॉसिबल. इट्स पॉसिबल. Prelims में only I think you get one or two numericals. One you may get from radioactive Yeah. dating, or just a little bit, not too much. And one from hydro. Yes, and one from hydro, one or two from hydro. Yes. Yes, and when if you're targeting GATE for a very good rank, okay, it's not just that you need to score only in numerical part. There is a non-numerical part to GATE as well. Yeah. And if you are following GATE, you would know that the pattern has changed this year. Okay, so there will be now 35 questions in the geology only section and 16 questions in common section geology geophysics. So number of questions in geology geophysics section has been reduced, and only in geology section it has been increased. The weightage has not changed. Okay, now you initially used to get just 1 mark question in common section and 2 marks in geology. So what I feel is this year in GATE paper you will get non-numerical type questions more, which they will put into 1 marks. 2 marks will be there for numerical types, because earlier what used to happen, there is a question in which you have to just choose one option and then you have to solve non-numerical. Both of them had a weightage of 2 marks. So to remove that discrepancy, they have this year. So if you're preparing for GSI prelims, I think it will help you in your GATE exam as well. GATE, you don't get a lot of questions. Number of questions in GSI is 120. So even those like 2-3 question, if you're able to get extra marks in, that will definitely help you. Okay. So it actually helps because क्या होता है कि like in GATE preparation the level of question is way higher than what you will get in GSI prelims. It's like I have seen this happen. So if you are preparing for GATE and for GATE, if you are having non-numerical type questions, those questions level is so high. Like it's not like comparable to the GSI prelims kind of questions. Okay, so if you have prepared for GATE well, so I think you can say ki like you have prepared yourself for the geology portion of the prelims. If provided all the syllabus, all the content has been covered. If you don't cover the syllabus, then there's a problem. But otherwise, it's quite achievable. Yeah. Another question that we have, is there like what is more important for the GSI mains examination when you're writing answers, to attempt more answers, okay, or to write fewer answers and you write very, very long answers? What do you think works? I've talked to many guys, like many people who have qualified examinations and who are giving examinations right now. Even myself, my experience has been that you have to cover the whole paper. You don't have to write very long answers for this. अगर आप ज़्यादा नहीं लिखते हो कोई बात नहीं है, आपने मेन पॉइंट लिख दिया, आपने उसका एक्सप्लेन कर दिया, आपने उसमें एक डायग्राम बना के छोड़ दिया, आपको लेकिन पूरा पेपर करना है. You can't leave a single question because what happens is कि if you have a 10 marks question, the most you can get in that question is realistically you can get like 6. If it's a very good answer, you can get like 7 or 8 in 10 marks. That's the highest point. But if at in this own scenario, if you do a lot of like I'll say the whole paper, if the whole paper is done by you, तो उस केस में क्या होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको नंबर किस में कितने ज्यादा मिलेंगे, आपके एवेन्यूज बढ़ गए, आपने क्वेश्चन ज्यादा किए तो एटलीस्ट यू विल गेट लाइक 1 या 2 नंबर आपको मिल जाएगा लाइक 5 वाले में, और आप 10 वाले में भी लिखोगे समथिंग, यू विल राइट समथिंग लाइक 1 point 2 point anything, so it will give you some marks. Because what I feel ki when examiner is checking like a subjective type questions, he's trying to complete his work and make sure that he's not hindering anyone's success from like being a person, being an officer or something like that. So in that case क्या होता है कि आप लिखिए उसमें कुछ, आप उसमें एक अच्छी सी लाइन लिखिए, उसमें थोड़े से टेक्निकल टर्म्स जो आपने पढ़े हैं उनको लिखिए, emphasize on your points by using a diagram, छोटा सा डायग्राम जो क्लियर है, जिसका कैप्शन आपने क्लियरली लिखा हुआ है नीचे की तरफ. दिस विल हेल्प यू गेट मार्क्स. उसको लगेगा कि आपको आता है, वो आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं. I felt this because मेरे कुछ आंसर्स they were not up to the mark, but still I got some numbers which I didn't know कि मेरे को मिलेंगे. So इसलिए पेपर पूरा करना is very important.
first complete the paper, then think about the content in the content kind of thing, like कितना quantity होना चाहिए. Quality तो मतलब quality तो चाहिए, quality के बिना तो काम नहीं होगा, but paper complete होना चाहिए. Yeah. तो ये एक मिथ ही है. हम सोचते हैं कि आंसर शीट्स भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे, 2-3 क्वेश्चंस में बहुत शीट्स भर दी और बाद में क्वेश्चंस मिस कर दिए. दैट इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. ओके, सो Yeah. you have to write an answer. Okay, so यूनिवर्सिटी में जनरली आदत पड़ जाता है पेज भरने का. So you have to attempt most of the questions, and that also works for example if you are preparing for UPSC civil services examination also. So there UPSC actually writes on the question paper that marks will not be given for the length of the answers. Okay, it will be given for the Yes. content that you are writing. Okay, so that is a very good advice. Thank you, Vishal, for that. Another question now we have again on YouTube is, was there like any answer writing strategy in terms of like, did you follow any format with introduction, body, conclusions, Yes. or was it more like just plain answers? So actually, in this examination we have four kinds of questions: 5-mark question, 10-mark question, 15-mark question, and 20-mark questions. So in that case, we have, like in my opinion, and what I followed was कि I had this three, जो एक बहुत ही नॉर्मल सा और बहुत ही जेन्युइन सा एक तरीका है कि पहले एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर एक बॉडी होना चाहिए, फिर एक कंक्लूजन होना चाहिए. बिकॉज होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया उन्होंने कि ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, दे आर आस्किंग अबाउट चार्नोकाइट्स. So when they are asking about charnokites, then the first thing which should come to your mind is that they are a very hybrid kind of rocks which are formed by anataxis. They have both signatures of igneous and metamorphic. So this is what you should write first, and then you can go a bit into in second line you can write key what are charnokite specific minerals like OPX and all that. So when you write all this, ये दो लाइन हो गई, आपने ये दो लाइन लिख दी. These 2 lines will tell the examiner that you know something. उसके बाद you can go a bit beyond and say like southern granular terrain में मिलता है. Okay, and this is a very high grade rock. You can find it might have formed in lower crustal kind of situation. Pressure temperature बता सकते हैं क्योंकि metamorphism की बात की है. And use as many technical terms as you can, like use anataxis, use partial melting लिख रहे हैं और anataxis करके लिख सकते हैं. Make it look कि you know a lot of things, but just because you didn't get the space, because 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको एक ही साइड मिलता है लिखने को, 10 के लिए 2 साइड मिलता है, 15 के लिए 3 और 20 के लिए 4. So if you like convince the examiner कि you know what you have written, you know more than what you have written, तो उस पे भी आपको नंबर मिलते हैं एक्स्ट्रा. That happens. और यही केस आप ये 5th में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कर सकते हो. बट इन केस ऑफ 10 नंबर क्वेश्चंस क्या होता है कि आप इंट्रोडक्शन जब लिख रहे हो तो उसमें क्वेश्चन भी बड़ा होगा. लाइक जैसे चार्नोकाइटिक की बात की तो वो कह सकता है चार्नोकाइटिक ऑल्ट्रेशन की बात करिए. तो आप जब चार्नोकाइटिक ऑल्ट्रेशन की बात करते हैं तो फिर आप उस केस में धारवार के बारे में भी थोड़ा सा लिखिए उसमें, है ना. कहिए कि ठीक है ये ट्रांजिशन जोन नीलगिरी के पास है, कहाँ पर है, किस तरह है, थोड़ा सा आगे पीछे का भी आप ऐड कर सकते हो. यू कैन इवन से कि लाइक द थिंग्स आर a bit like dicey, यहाँ पे पता नहीं है, बट जो एक है पिचामुतु ने देखा ऑल्ट्रेशन, लाइक जो जितना ज्यादा आप थोड़ा थोड़ा आप दिखाते रहिए. एंड इफ यू डोंट हैव कंटेंट, लाइक कभी कभी क्या होता है 10 नंबर के क्वेश्चन या 15 नंबर के क्वेश्चंस में यू डोंट हैव कंटेंट, इतना सारा कंटेंट नहीं है आपके पास, तो आप एक डायग्राम बना दीजिए. ओके, लाइक यही क्वेश्चन है ऑल्ट्रेशन वाला, ये चार्नोकाइट्स ही है. अब इफ यू मेक अ डायग्राम ऑफ लाइक सदर्न ग्रैनुलर टेरेन, आपने एक पेनिनसुलर अपना बना दिया, उसमें आपने दिखा दिया ट्रांजिशन जोन दिखाने के बाद यू से कि भाई दिस इज मार्क्ड एज दिस इज वेयर ओपीएक्स अपीयर्स, ऐसे करके मार्क कर दिया और नीचे आपने एक कैप्शन लिख दिया कि लाइक दिस द अबव फिगर इलस्ट्रेट्स दैट चार्नोकाइटिक ऑल्ट्रेशन हैज बीन सीन इन सदर्न ग्रैनुलर टेरेन. इस तरह से कर करके इफ यू से, तो क्या होता है आपका स्पेस थोड़ा सा भर जाएगा, आपका स्पेस भर जाएगा तो दे विल नो कि ठीक है ये एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई फॉलोड इन माय. और एक कंक्लूजन रहना चाहिए, अगर कंक्लूजन रहता है तो इट्स इजियर टू लाइक से कि हाँ यहाँ तक हमने लिखा है, ये है हमारा आंसर. डेफिनेटली. इसी का फॉलोअप क्वेश्चन, सो डिड यू राइट लाइक, डिड यू फॉलो अ पैराग्राफ फॉर्मेट और अ बुलेट पॉइंट फॉर्मेट, और यू डिडंट हैव लाइक एनी प्रेफरेंस in that regard? Well, preference, so there was no preference in that, because in case of 5 marks question you have to write, sometimes you have to write in bullet marks. Okay, but sometimes what happens, like there's less time. Okay, so in that way you can't make bullets, you don't have time to make bullet points or something like that, you write in paragraphs.
And in the same way, in 10-mark questions also, sometimes you have to write in bullet points. Like if they ask you about fluvial landforms, so then we will have to form like bullet points and say कि ठीक है ये erosional है, ये fluvial में ये erosional वाले हैं, ये depositional वाले हैं, तो आपके bullet points अपने आप ही बन जाएंगे. बट यहीं पे अगर वो आपसे पूछ लेता है कि व्हाट आर ओर फ्लूइड्स, हाउ ओर फ्लूइड्स फॉर्म ओर डिपॉजिट्स, तो इन दैट केस ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए कि आप एक पैराग्राफ लिखिए, उसके नीचे एक डायग्राम बनाइए, उस डायग्राम को कैप्शन करके उसको एक्सप्लेन कर दीजिए. दैट्स अ बिट मोर इजी. So it depends on the question. In my case, it was like not very much Strict कि only. ठीक है हमें यही बनाना है. Yeah. Okay, thank you, Vishal. Let's take one question now from YouTube. I'm getting actually, this is still an early stage, okay? So we are right now preparing for prelims, but there are students who are still asking for the interview stage already. So is it difficult, or the question is like, is it difficult or is it easy, or what to expect during an interview? So in an interview, you can expect the interviewer to know your state of mind actually. Like he knows कि ठीक है आप आए हैं, आपने इतने एग्जाम्स क्वालिफाई किए, आप आए हैं, तो आपको आता है, you know your stuff. But just because there's this aura of UPSC interview, and when you get into the UPSC bhavan, you will see that it's a very big, grand bhavan, and then there is this air marshal or field marshal's office in which you will go, and there is a lot of furniture and bureaucracy and all that. So you will get a bit like, भाई कहाँ से देंगे, कैसे करेंगे? But these guys, these professors, all these people, they know like you are there, आपको आता है, they will encourage you to give correct answers. If you are like going toward a correct answer, for instance, if they'll ask you about piggyback thrusting, okay, so they'll ask you कहाँ पर है, तो अगर आपने हिमालय बोला है तो उन्हें समझ में आ गया कि आपको आता है, then they will go beyond and they'll ask you कि इसका एग्जाम्पल बताओ, और उसमें आप एग्जाम्पल बता रहे हैं बट यू जम्बल अप योर लाइक सीक्वेंस, MCT MBT MFT वाला, तो उसमें भी वो दे हेल्प यू कि आपको सही लग रहा है, यही होगा क्या, कि ऐसे नहीं है वैसे होगा, इस तरह करके. सो इट्स अ वेरी कॉर्डियल काइंड ऑफ इंटरव्यू. आई विल से कि आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ PhD इंटरव्यूज, project interviews, and this UPSC interview, even ONGC interview I gave. So ONGC and GSI interviews are very, I'll say, very much student centric. They don't push you, they don't harass you कि भैया क्या आता नहीं है, आपको नहीं आता, आप कुछ मत करिए, इस तरह का आप छोड़ दीजिए, आप क्यों आ गए, इस तरह नहीं करते. It's good. आपको like in my opinion nobody should fear about what exam interviewer will say, but the questions are interesting. Like in my case, I was given 3 aerial photographs when I got in, and they asked me to interpret it right there and then. I had to interpret it, and then they asked me questions on based of this. Sometimes they have samples also, which they'll keep on the table where you are sitting, and they'll ask you to like interpret and say कि क्या है, कैसा है, बताएं. हाँ. Yeah. Okay. I think students face difficulty in economic and stratigraphy subjects. So this question is also from YouTube. So what are your suggestions for these economic and stratigraphy subjects? स्ट्रैटिग्राफी के लिए आई विल से कि आप एक किताब उठा लीजिए, ठीक है. इन माय ओपिनियन आई विल से KS वालदिया सर की एक मेकिंग इन इंडिया जियो डायनामिक्स की किताब है, जियो डायनामिक्स ऑफ इंडिया करके किताब है. That book has a lot of tables and a very good illustration. काफी बड़ी किताब है. If you can read this book, it's well and good. Okay. If you can't read this book, I'll say कि follow TK Viswal sir's YouTube lectures also on stratigraphy. They are a bit old, but they are good. And for preparation from stratigraphy point of view, you have to write every day. You have to revise the tables. आप एक जगह सारी टेबल्स लिख लो, ठीक है. आपको जो जैसे लॉरेंस के भी नोट्स जो स्ट्रैटिग्राफी पर हैं, कैमरियन बाउंड्री और वो सारे, आप वो नोट्स लीजिए, उसमें से जो टेबल्स हैं कम से कम उन टेबल्स को एक जगह पे लिखिए एंड लाइक रिवाइज देम. 4-5 पन्ने की टेबल्स में सारे स्ट्रैटिग्राफी भारत की आ जाएगी आपके पास, एंड उस टेबल को आप बार बार रिवाइज करिए, देखिए. बाउंड्री प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट है, उनसे एक क्वेश्चन हमेशा आता है. शिवालिक से क्वेश्चन आता है, गोंडवाना से क्वेश्चन आता है. इनसे आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मिलेगा, बिकॉज दे आर वेरी मतलब डाइवर्सिफाइड हैं. और शिवालिक के साथ तो ये है कि पेलियंटोलॉजी और वर्टिब्रेट पेलियंटोलॉजी और बाकी आपका हेवी मिनरल असेंबलेज और स्ट्रैटिग्राफी वाइज फिर हिमालयन एक एलिमेंट है उसमें, तो आपको कहीं ना कहीं शिवालिक से एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा. इस तरह गोंडवाना से भी आपको एक क्वेश्चन इकोनॉमिक में मिलेगा, कोर पे, एंड पेलियंटोलॉजी में मिल सकता है, ठीक है, आराम से मिल जाएगा प्लांट फॉसल्स को लेके, और स्ट्रैटिग्राफी में भी मिलेगा.
सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक। जब आप पेपर स्टडी करते हैं तो उसमें आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो टेबल्स आप पढ़िए, थोड़ा सा आप एक बैकग्राउंड बनाने के लिए आप किताब पढ़ सकते हैं, आप लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं सर के और किताबों के। उसके बाद आप लेकिन टेबल्स को रोज करते रहेंगे तो आपके मन में रहेगा कि ठीक है भाई ये सक्सेशन होता है। एंड इफ इन स्ट्रेटिग्राफी के पेपर में क्या है कि अगर आपने सक्सेशन सही लिख दिया है और आपको एक आइडिया है, जैसे आप हार्ड रॉक टेरेन में हैं, ग्रीनसिस्ट या आपके ग्रीनसिस्ट ग्रीनस्टोन बेल्ट में हैं, तो आपको इतना तो पता है कि ग्रीनसिस्ट मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, हार्ड टेरेन है, सेडिमेंट्री कम है यहाँ पे, तो आप उसको उस तरह से फ्रेम करके भी आंसर लिख सकते हैं। आप उसमें बता सकते हैं कि कहाँ की बात आप कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, इस तरह से करके। सो इट हेल्प्स। तो स्ट्रेटिग्राफी के लिए तो यही है मतलब ये मेरा तरीका था। बिकॉज धारवार का पूछते हैं और क्रेटॉन्स का पूछते हैं तो उसका याद रखने में प्रॉब्लम होता है। सो इन दैट केस यू नो कि बेसिकली है क्या, वहां पे हो क्या रहा है। तो आप उतना भी लिखेंगे तो लोग को पता होगा कि भाई ठीक है आता है, तो इतने से काम चल जाता है। और टाइम भी कम है, बिकॉज 10 मिनट्स में आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं 10 नंबर के। ओके नहीं, हाँ नहीं 10 10 10, हाँ ओके। सो टाइम कम रहता है, तो उस केस में भी अगर आप जितना ज्यादा लिख पाए, आपको जितना ज्यादा आप स्पॉन्टेनियसली लिख पाएंगे वही आपके पेपर पे आएगा। सो आप उस तरह से अपने आप कॉन्सेप्ट बना के आप करेंगे तो हो जाएगा। बाकी इकोनॉमिक के लिए इंडियन एग्जाम्पल्स के लिए उमेश्वर प्रसाद काफी अच्छी किताब है, उससे आप बहुत सारी चीजें आप निकाल के रख सकते हैं। थोड़ी आउटडेटेड है बिकॉज बिहार और झारखंड जैसे ये सब के लाइक डिवीजन से पहले की किताब है ये। तो इन दैट केस यू हैव टू सी कि कहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। अदरवाइज उसके लिए वो ठीक है। और जेनेसिस वगैरह के लिए यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स आप देख सकते हैं अगर इफ यू वांट। अदरवाइज अगर आप किताब फॉलो करना चाहते हैं तो रॉब की किताब भी देख सकते हैं। थोड़ा एक्सटेंसिव ज्यादा है, अगर ज्यादा एक्सटेंसिव लग रहा है एडवांस देख सकते हैं आप। ठीक है, बस एक आइडिया रखिए, ठीक है, कि जैसे ओवर फॉर्मिंग फ्लूइड्स हैं, तो ओवर फॉर्मिंग फ्लूइड्स कहाँ से आए हैं, क्या है, मीटियोरिक वाटर क्या होता है, कोनेट वाटर क्या होता है, और सेडेक्स क्या है, वीएमएस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। लाइक इवन लॉरेंस के इकोनॉमिक जियोलॉजी वाले कोर्स में आई हैव फॉलोड हिज लाइक पोर्फायरी, सेडेक्स और वीएमएक्स वाले, बिकॉज उतना कंसाइज मटेरियल मेरे को तो नहीं मिला, बिकॉज रॉब में काफी एक्सटेंसिव है, एडवांस में काफी कम है कंपैरेटिवली। और बाकी फिर और किताबें आप रिडली वगैरह देख सकते हैं। बट मतलब अगर आपको कहीं पे कंसाइज मिलता है तो जैसे यही कह रहा हूँ मैं, गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे जो आप नोट्स बनाते हैं या जो भी चीजें आप अभी कवर कर रहे हो, उन चीजों को ही आप अगर लिख दोगे इट्स मोर देन इनफ। सो ये कर सकते यूजुअली हैं, इस तरह क्योंकि से पेपर में टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता सोचने का, आप सोचोगे कि बहुत एक्सीलेंट आंसर लिखेंगे, और इसीलिए व्हाट विशाल वाज सेइंग, प्रैक्टिसिंग आंसर्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। बिकॉज एग्जाम में इट्स लाइक समटाइम्स यू हैव टू वॉमिट। ओके, आपको बिना सोचे समझे पेन चल जाना चाहिए उस चीज़ में। बिकॉज अगर आप वहाँ पे बहुत हिसाब लगाने लग जाएंगे, बहुत सोचने लग जाएंगे, सो यू मिस हो जाएगा कुछ सेक्शन पेपर का। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको बेसिक बेसिक, और आप बहुत डिटेल में इनिशियली पढ़ भी लेंगे, हो सकता है एग्जाम में याद ना रहे, बट आपको बेसिक ओवरऑल कवरेज सिलेबस का होना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड सम एंड एटलीस्ट इन सम आंसर्स विशाल now he told us very important points, right, which you can write, okay, which you have to think about in some of the answers. Okay, all right, we are running towards the end एक of this चीज session. सर, Yes, एक चीज और ऐड करूंगा मैं। हाँ, होता क्या है कि व्हाट हैपेंस कि समटाइम्स जैसे आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी है, स्ट्रैटिग्राफी है, जैसे ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, काफी डिफिकल्ट है, पेलियोंटोलॉजी है, इन सबको याद रखने में बहुत प्रॉब्लम है। तो आप इन सब केसेस में क्या कर सकते हैं कि आप उसमें जैसे इकोनॉमिक जियोलॉजी का क्वेश्चन है उसमें आप स्ट्रैटिग्राफी का डाल दीजिए। ठीक है, लाइक इफ दे आर टॉकिंग अबाउट कोलार ग्रुप तो आप धारवार में डाल दीजिए ईडीसी का, ईस्टर्न धारवार क्रेटॉन का आप स्ट्रैटिग्राफी लिख के उसमें डाल देंगे, आंसर अपने आप ही 2 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, बिकॉज यू आर लिंकिंग योर कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स लिंक करते हैं इट रियली हेल्प्स यू टू गेट मार्क्स, और उसमें आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता है। बिकॉज आपने जैसे शिवालिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपने शिवालिक्स पढ़ लिया, आपको हेवी मिनरल सिलेबस पता चल गया कि ठीक है भाई काइनेट यहाँ मिलता है, हॉर्नब्लेंड यहाँ मिलता है, स्टॉरलाइट यहाँ मिलता है। आपने वो उठा के क्या किया, जब हेवी मिनरल प्रोवेनेंस की बात आती है सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी में, वहां पे उठा के उस आंसर में एक एग्जांपल दे दिया इस चीज का स्ट्रैटिग्राफी के साथ, आंसर अपने आप बहुत तगड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा आपका आंसर। सो ट्राई टू इंटरलिंक योर कॉन्सेप्ट, और definitely. अपने पूरे सिलेबस को आप इस तरह से प्रिपेयर करिए या कि जैसे अगर आप कहीं पे भी एक आंसर लिखें तो वहां पे उस चीज का वो पोर्शन आप फिर से यूज कर सकें कहीं पे। तो उस केस में स्ट्रैटिग्राफी काफी यूजफुल है, आप कहीं पे भी स्ट्रैटिग्राफी यूज कर सकते हैं। लाइक चाहे वो पेट्रोलॉजी का क्वेश्चन है, चाहे वो सेडिमेंट, चाहे वो आपका मतलब रिमोट सेंसिंग का क्वेश्चन है, कहीं पे भी आप जरा सा ऐसे नाम एरिया का पेलेंटोलॉजी नाम में भी डाल के बहुत कर लिंक आ सकते जाता है स्ट्रैटिग्राफी एंड हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट. तो यार Yes. Yes, definitely. That is a very good point. So you should also learn how to interlink.
between सब्जेक्ट. तो एक खास करके कुछ सब्जेक्ट्स होंगे विच कैन बी यूज्ड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे आप फॉर एग्जांपल कुछ स्ट्रक्चरल के कॉन्सेप्ट्स यू कैन यूज इन इंजीनियरिंग जियोलॉजी, मोहर सर्कल एंड ऑल. फेलियर फॉर एग्जांपल स्लोप फेलियर होता है, देयर इज रॉक फेलियर, फॉल्ट वगैरह. तो यू कैन शो फॉर एग्जांपल पोर प्रेशर इफेक्ट्स. सो दीज थिंग्स कैन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे बोला कि पेलेंटोलॉजी फॉर एग्जांपल डिफरेंट फॉसिल्स हैं. इवन पेलेंटोलॉजी को आप स्ट्रेटिग्राफी से लिंक कर सकते हैं. स्ट्रेटिग्राफी कैन बी लिंक्ड इनटू पेलेंटोलॉजी. सिमिलरली इकोनॉमिक जियोलॉजी से लिंक हो सकता है. सो these become very important. Okay, so we are now and close to the end of the session, but I'll take few more questions because there is still 10 minutes left. There's still 10 minutes left. Okay, so Yes. you see, I think there's some questions regarding how much should we target in GS paper, general studies paper. Do you have any? I think as high as you can, that will be better. But The thing is, yes sir, the thing is with this is like हमने अपने में भी देखा कि हमारे साथ भी जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिन लोगों ने प्रीलिम्स में जीएस के पेपर में जिसके नंबर हमसे 10 ज्यादा हैं, उसकी रैंक हमसे 2 ज्यादा है इस समय. ओके, सो एज फार एज आप जितना ज्यादा जीएस में नंबर उठा सकते हैं ना, उतना नंबर जियोलॉजी में कोई और लाइक इट्स नॉट इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट इजी एंड नॉट एवरी एस्पायरेंट which is working for GSI is going into this kind of depth to carry GS के number. Okay, you won't get GS के number easily, and if you get some numbers, na, it really boosts up your chances of getting selected. In my case also I've seen, because in my MSc years I used to prepare for civil services also, so I've seen that difference. You have this mentality of looking at things and remembering things or in that case that way, and that really helps because it changes the dynamics. क्योंकि आपका प्रीलिम्स के नंबर आपके ऐड होने ही होने, तो आप मैक्सिमम की सीलिंग मत रखिएगा उसमें. आप लाइए, आप जितना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं उतना बेहतर है. डेफिनेटली ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा रहेगा. जनरल जियोलॉजी में जो वेरिएशंस रहेगा स्कोर में, सो इट विल नॉट बी एज मच, क्योंकि जियोलॉजी सब जियोलॉजी बैकग्राउंड से दे रहे हैं. सो दे हैव स्टडीड. सो इफ यू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन इट विल बी नैरो. स्टैंडर्ड डिविएशन कम रहेगा स्कोर का. But if you are looking for example, general studies, so for some they have never studied it before. कुछ लोगों का preparation अच्छा नहीं रहेगा. So you will see a lot of variation. So वहाँ पर you have a chance to get ahead a lot of people. So something that you can actually prepare for. So that is where general studies can become very important. Definitely. yes, yes. Okay. Regarding GS, we will have one session. Okay, Mayank sir, for example, he has secured 135 plus marks in UPSC prelims multiple times. Okay, so he will also guide you. I will also be there. So Vishal can also be there. So we can have that session where you can basically talk about how to prepare for the general studies portion as well. We will also go through solutions of the previous year papers. We have also planned that part as well. Okay, so especially we'll start with the latest one. Okay, so and then we'll go to the previous. So we have only 2 samples with us. Okay, but you'll see the pattern between them is not very different. They are very similar. Okay, they are asking a lot of questions from science, and then a lot of questions from ecology, environment, geography questions are also there. History, polity questions are also there. From constitution, they are asking about, for example, if you are preparing for constitution, sometimes अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, ठीक है, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत स्ट्रेटेजाइज करना है, यू लुक एट द क्वेश्चंस व्हाट दे आर आस्किंग. आपको जैसे अभी जो लेटेस्ट पेपर आया, गो लुक अप पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. ओके, जनरल स्टडीज में हर जगह काम आएगा क्या पावर्स हैं, कैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है. सेम फॉर गवर्नर. ओके, व्हाट इज अ मनी बिल, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ बिल्स. सो बहुत स्पेसिफिक चीज़ें, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं. कोई भी जितना मतलब मैंने देखा है जनरल स्टडीज में, इट्स नॉट समथिंग दे आस्क्ड आउट ऑफ द ब्लू. यू हैव टू कवर इट. इफ यू कवर इट, फ्यू क्वेश्चंस विल बी देयर. लैंग्वेज कैन समटाइम्स बी कंफ्यूजिंग, हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस में. You also don't have to get 100 out of 100 also. Okay, you'll get a very high score if you prepare well. So specifically strategize करके you can prepare some important topics even if you don't go through entire polity. आपको fundamental rights पता होने चाहिए, fundamental duties, basic articles for president, governor, legislature, okay, executive, judiciary. So I counted these topics in fingertips, so at least study these.
कुछ जो बेसिक हो सकता है. So you have to strategize your general studies preparation, especially if you start it now, because a lot of time you don't have a lot of time at this stage. तो उसको काफ़ी strategize करना पड़ेगा. General studies, analyze previous year papers. I think Vishal, when you appeared in that exam, he didn't even have the luxury of going through previous year general studies paper. So now you at least have, Yes. you guys have at least the luxury that you can look at previous year papers from the general studies part. And in that sense, there can be a little bit, I think, higher competition also this time around, because students know what to expect, where they can prepare. But overall, that is also a very good thing for you all, because now you know what to prepare. Okay, during Vishal's time, he didn't know, he didn't have like any idea. It was like a blind game for him. So that is why it is a very good achievement that he was able to clear through, especially in that year when pattern suddenly changed. Okay. All right. Okay, one final question that we can take. If you have any further questions, please email to us. I will send my email in the on YouTube as well. Before I go to, I'll ask like a penultimate question. Final question will be something different. So Yes, sir. they're asking, in prelims, do they ask questions specifically from the prelims syllabus, or do they also like ask questions from mains exam, main syllabus? Do they are they strict in that regard? Sir, topics overlap करते हैं. They overlap their topics. There is no difference or distinction between the topics which they'll ask from prelims and mains. Like in case of hydrogeology, if you can see, the hydrogeology syllabus is very big, but it's not that vast as compared to all the combined three papers. So there's bound to be some questions which will be like I will say repeated, because like in hydrogeology also there are some concepts like hydraulic conductivity, Darcy law. All these questions will also come in the paper, like first or second section of the hydrogeology paper. So there is no distinction in that case. That's why I'm saying you have to cover मेंस फर्स्ट. आप मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स की तैयारी इस तरह से कर सकते हैं कि आप मेंस जियोलॉजी जो है मेंस के हिसाब से पढ़िए, और प्रीलिम्स के लिए जो भी आप पढ़ रहे हो ना, तो आप रोज उसमें थोड़ा करंट अफेयर, थोड़ा साइंस वाला पोर्शन पढ़िएगा. और क्योंकि ये साइंस का पेपर है, ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का पेपर है, तो साइंस पे एम्फोसिस इन लोगों का हमेशा से ज्यादा रहेगा. एंड लुक फॉर द न्यूज विच आर लाइक ज्यादा जियोलॉजी या अर्थ स्पेसिफिक है. जैसे इन माय केस जब हम पढ़ रहे थे तो एक प्लैनेट था विच वाज नेम्ड आफ्टर जसराज जी, म्यूजिशियन थे वो. तो उस पे एक क्वेश्चन आया. तो अगर आप उस तरह से थोड़ा कवर करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि अभी जैसे बहुत सारे फॉसिल्स डिस्कवर हो रहे हैं. इवन अगर आप इन शॉर्ट्स फॉलो करते हो, या इफ यू आर फॉलोइंग सम चैनल्स, सम करंट अफेयर चैनल्स ऑन यूट्यूब, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे फॉसिल्स, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशंस, अर्थक्वेक को लेके चीजें, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग. सो वो सब चीजों पे आप थोड़ा ज्यादा अपना एम्फेसिस रखिएगा, बिकॉज उससे क्वेश्चंस फंसते हैं, क्योंकि जियोलॉजी का पेपर है, अर्थ साइंसेस से आएंगे क्वेश्चंस. Yes. Okay. So Sonu has asked this question twice, so that is why I'm going to take it over here. So on YouTube, Yes. he's asking if anybody starts preparation from now from scratch, is it possible? Yeah, is it? It is like I won't say it's absolutely possible, but it's possible. Like जैसे सर कहते हैं, strategize करना पड़ेगा. पॉलिटी है, सब में देखिए, सब चीजों में कुछ कुछ पोर्शंस हैं. लाइक ज्योग्राफी के लिए आप, ज्योग्राफी के लिए जैसे मैंने फिजिकल ज्योग्राफी की बात की, सर ने बताया इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, उतना आप कवर कर सकते हैं. बिकॉज 11th-12th की आप अगर एनसीईआरटी उठाएंगे तो वो इंडियन ज्योग्राफी पे पूरी है. उसी में आपको डेमोग्राफिक्स के भी मिल जाएंगे पोर्शन, जो तीसरा पोर्शन है जीएस का, वो भी कवर कर देगा. और उसके बाद फिर अगर आप और देखें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट हो जाएगा. और And what about पॉलिटी में जैसे सर geology ने in बताया general? I think फंडामेंटल. he also means, I'm not sure, but अच्छा, Sonu, जियोलॉजी. वो भी ओके, सब पूरा preparation scratch से. फाइन फाइन. हाँ, तो आप कर सकते हो. ठीक है, यू टेक अप योर नोट्स. आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास कुछ चीजें होंगी, लाइक यू माइट हैव सम नोट्स और सम बुक्स विच यू आर स्टडिंग. ओके, स्टार्ट राइटिंग. ओके, डोंट मेक, अगर आपके पास टाइम नहीं है, डोंट मेक नोट्स. स्टार्ट डूइंग आंसर राइटिंग. गेट योर सेल्फ इनटू दिस, एक माइंडसेट में लाइए कि जब आपके पास समय कम होगा तो आप लिख कितना पाएंगे. तो जो पहली चीज आपको हिट करेगी वो ये है कि आपको जितना आता है आप उतना लिख नहीं सकते, बिकॉज टाइम कम है. 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए यू गेट 3 मिनट्स. ओके, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए यू गेट 10 मिनट्स.
10 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, यू विल गेट 10 मिनट्स। आपको एक सेक्शन को 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, वट एवर यू डू, आप जैसे भी करिए, ठीक है। जैसे वो 15 नंबर का क्वेश्चन आया तो 2 क्वेश्चन आएंगे, 15 मिनट मिल गया आपको। 20 का आया तो 20 का आएगा, और 10 का आएगा तो 10 मिनट का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मिनट आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मिल गए। उस हिसाब से आपको लिखना है। तो यू विल फर्स्ट फील कि आपको जितना आता है आप उतना लिख नहीं पा रहे, तो आप लिखिए। जैसे मैंने बताया, मेरा भी प्रिपरेशन, क्योंकि मैं सब चीजें साथ में कर रहा था, मैं गेट भी पढ़ रहा था, इवन मैंने सिविल्स की तैयारी की तो मैं सिविल्स का भी थोड़ा बहुत देखता था, और मैं जीएसआई का भी देख रहा था। तो जब बाद में जाके जब मैं बिल्कुल फ्लो में आया तो यही टाइम हो गया था, आई गेस, अभी जो आपका अक्टूबर वाला टाइम चल रहा है। तो इस टाइम पे आई वाज जस्ट मतलब रीडिंग एंड राइटिंग आंसर्स, और वो आंसर्स मैं खुद से इवेलुएट करता था। आई ट्राई टू लाइक, मैं अपने सीनियर्स से थोड़े से इवेलुएट करवा लिए, किसी से करवा लिए, उन्होंने कर दिए। अदरवाइज एक पॉइंट के बाद आपको खुद से करने पड़ते, बिकॉज देयर इज अ बल्क ऑफ योर आंसर्स जो आप सबको भेज नहीं सकते। ओके, आप सबको भेज नहीं सकते अपने सारे आंसर्स, यू हैव टू सी क्या, हाँ ठीक है, हमने यहाँ ये मिस कर दिया है, यहाँ हम ये ऐड कर सकते हैं, उससे एक सेंस बन जाता है। सो दिस हेल्प्स यू। आप अभी से शुरू करोगे, यू कैन डेफिनेटली डू एटलीस्ट जियोलॉजी का पोर्शन में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जीएस भी आप कवर कर सकते हैं, से हो मेंस सकता तक तो अभी you have almost 10 months. Okay, so है। if you're able to, ऑब्वियसली as he said, like if you don't maybe आप मेन पॉइंट्स लिखिए नोट्स में, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में, यू डोंट हैव टू कॉपी एंटायर स्लाइड्स। कोई चीज़ आपको लगता है कि आप भूलेंगे उसको बार बार, मे बी दैट पॉइंट ओनली यू कैन राइट, यू डोंट हैव टू राइट ईच एंड या एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू राइट फॉर एग्जाम्पल एंटी फॉर्म क्या होता है, सिन फॉर्म क्या होता है अपने नोट्स में। समटाइम्स आई सीन पीपल दे स्टार्ट लाइक व्हेन दे आर मेकिंग देयर नोट्स, वो उतना भी सब लिखेंगे, सो कुछ चीज़ें आपको टाइम के साथ साथ ऑब्वियस हो जाती हैं। सो things बिल्कुल। for example which you forget, you can write those, or if you start preparing, try to do well in general studies, in prelims. Okay, अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपके पास उसके बाद भी कुछ और महीने रहेंगे पॉलिश करने के लिए, वट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड। सो इट्स नॉट दैट कि टाइम स्टिल काफ़ी टाइम है, इट्स अक्टूबर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो आई थिंक प्रीलिम्स अगेन इज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट इफ यू एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एंड होपफुली इफ यू आर एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, आई थिंक देयर इज सफिशिएंट टाइम अंटिल मेंस एग्जाम। 10 months is still you या can, yes. Okay. So Vishal, I think I didn't see this question a lot, but was there? So this is from my side. I think a lot of students will have this question, okay, but I think they are shy to ask. Does it like ever during preparation? Does it ever like occur that you are feeling less motivated, you lose motivation, and what you can do to regain motivation during those stages? यस सर, दिस ये एग्जाम ना, एग्जामिनेशन में लाइक इट टुक मी अराउंड, आई से बिकॉज ऑफ कोविड इट टुक मी अराउंड 2 years. Okay, and it was very, I'll say at times it's very demotivating, because what happens is you don't see progress which you want to see. आपको पेपर्स आप लगा रहे हो, बट यू डोंट गेट कि आप हम इसमें और अच्छा क्या लिख दें, या इसमें हम और अच्छा क्या पढ़ लें, या क्या हो गया, या कभी कोई रिजल्ट्स आ गए, इफ यू आर गिविंग लाइक एग्जामिनेशंस, तो उसमें कहीं पे आपका सिलेक्शन होता है, कुछ इंटरव्यूज आप पीएचडी के लिए मैं दे रहा था, उसमें हुआ नहीं हुआ, तो ऑल दोस फैक्टर्स यूज टू कम इन, और बहुत होता है, बिकॉज साइकिल की तरह चलता है। सम डेज यू फील वेरी गुड, यू राइट गुड, यू डू गुड स्टफ, आपको अच्छा लगता है, यू थिंक यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर डूइंग समथिंग। सम डेज यू फील वेरी बैड, like nothing is happening, what will I do, this field is very narrow, ye sab wo sab, everything happens with you. Okay, and medical problems are also there sometimes, because आप कभी आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका फ्लो टूट गया 4 महीने, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, फिर से स्टार्ट करना रोज, लाइक सुबह एक टाइम पे उठ के मतलब 3 घंटे देना, फिर 3 घंटे देना, इस तरह करके 8-9 घंटे देना रोज, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और होता है। in that way if you think like in that case, if you think, अगर आप उस तरह से सोचेंगे तो क्या होता है कि चीजें आएंगी और चीजें जाएंगी, कि कुछ दिन आपको अच्छा लगेगा, कुछ दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, but something has to remain constant, and that has to be a minimum set of hours which you sit on your table and chair and write whatever you are studying, whatever are your like motives कि आज हम ये करेंगे, आपको टेबल चेयर पे बैठ के उतना 3 घंटे 4 घंटे देने हैं। किसी दिन नहीं होता है, आप 8 घंटे नहीं दे सकते, किसी दिन होता है आप बिल्कुल नहीं दे सकते, उस दिन आप आधा घंटा बैठिए, 1 घंटा बैठिए, बट बैठिए, प्रॉपर होके बैठिए। लाइक मेरा तो, मैं तो ये करता था कि मैं जो पहन के जाऊंगा कॉलेज में, मैंने जो मतलब पेपर में जो मेरे को देख के जाना है, तो मैंने सोच लिया था कि मैं टी शर्ट और पजामाज में और स्नीकर्स पहन के जाऊंगा अपने, तो मैं उन्हीं को ही लाइक मेरे पास कुछ थे, मैं उनको मतलब रोज पहनता था। जब भी मैं आंसर्स लिखने बैठूंगा तो मैं वो अटायर पूरा पहन के ही बैठता था, जो पेन मेरे को यूज करना था,
I decided on my Pentonic pen, that there's a black color 5 रुपए का 10 रुपए का पेन है वो, तो वो पेन मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं इसी से लिखूंगा, तो मैं उसी से लिखता था। तो आप जब अपनी एक थिंकिंग बना लेते हो कि दिस इज लाइक आई एम गोइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और ये मेरा तरीका होने वाला है, तो आपको आएगा मोटिवेट, आप डीमोटिवेट हो गए, लेकिन रोज आपको पता है कि ठीक है ये दिन आया है, कल का दिन अलग आएगा, इस तरह से करके यू हैव टू गिव एक छोटा सा क्रिटिकल मास ऑफ प्रिपरेशन रोज। 2 घंटा दे दीजिए, जिस दिन मन नहीं कर रहा 1 घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए रोज, मत छोड़िए मतलब एक Consistency दिन is very पीछे। important. So yeah, something that you should Yeah. all keep in mind. This is a very very good advice. Consistency. You have to be consistent. ऐसा नहीं है कि एक दिन जोश आया तो 16 घंटे पढ़ दिए और फिर 2 दिन कुछ नहीं पढ़ा. So आप 16 घंटे को अगर 3 दिन में ओके या 4 दिन में 4 घंटे पढ़ेंगे या 5 घंटे पढ़ेंगे, that will be more useful, fruitful than studying let's say 16 hours in just one day and then not studying anything for that part. Okay. Yes. 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 So thank you, Vishal. Okay, very much. I think students, most of the aspirants, they found this session very, very useful. I would say even I found it very useful. Okay, so Vishal has always been a very bright student. Okay, and his even today I was discussing, I was teaching structural geology lesson, and then there was the question on riddle shear. Okay, so not question in the slides it was there, and I was Yes. like, you maybe don't need to go into this much detail to students, but I think this is in the slides just because Vishal requested it. Okay, that last year I put it there, and I remember that day Vishal requested that, and the day I covered it, he was not there in the class also. So Yes. yeah, so anyway, so whatever he has told, okay, is very good advice. So please keep that in mind, and I think you will all do well. Okay, so thank you, Vishal, very much. So with this, we will end this session here. If you have any questions, I've shared my email ID. You can all ask those questions over there, and hopefully we will have future sessions on general studies preparation as well. So all of you will be again will put those notifications, and please keep visiting our website and YouTube channel to see those notifications. Okay, thank you, Vishal, very much, and thank you all for joining the session today. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir.